welcome to this new tutorial. This is the part 2 of the tutorial series which we have started on understanding the forms of government. In my last tutorial, I have discussed about 5 different forms of government, and the link of that tutorial you will find in the description box below as well as on I button here. So in this second part, I am going to discuss about more other forms of government. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में, और ये दूसरा पार्ट रहेगा हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कवर किए थे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 2। वेल, हियर वी हैव नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज डेमोक्रेसी। Well, it is a government in which the supreme power is retained by the people, in which the people come together to decide as all laws and methods of ruling the government. Well, it is very obvious that the real democracy is where the people retains the power. People have all the supreme power, and it is people who will decide what kind of a laws they need, what kind of a regulations they want to have, and obviously the methods of ruling the government. And here the real power lies with the people and not anybody else. And the example of such democracy we had it once in a Greek city society states 1000 years back, and in modern time we have such democracy where people are more powerful. It is in स्विट्ज़रलैंड। डेमोक्रेसी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी में जो रियल पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है, वो लोगों के पास होता है। और यहाँ पर लोग डिसाइड करेंगे कि उनको कैसा कानून चाहिए, कैसा लॉज या फिर रेगुलेशन चाहिए, और सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। और ऐसी डेमोक्रेसी एंशिएंट टाइम में ग्रीक सिटी सोसाइटीज़ में हुआ करती थी। वहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पावर थे, और आज की तारीख में स्विट्ज़रलैंड ही ऐसा एक देश है जहाँ पर ऐसी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। इन फैक्ट इन स्विट्ज़रलैंड दे आल्सो हैव द पावर टू रिकॉल देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ दे डोंट फंक्शन और इफ दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस ऑफ द पीपल। मतलब स्विट्ज़रलैंड में ऐसा भी कानून है जहाँ पर लोग अपने विधायक को वापस बुला सकते हैं अगर वो विधायक वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ रियली अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वी हैव इज एरिस्टोक्रेसी। वेल, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी और upper class, in which power is derived by how much money and property you possess. Well, aristocracy is that form of government where we have a power controlled by certain nobilities, or especially people who belongs to upper class. And one of the very important determinant to have that power, or to desire to have that power, is by basically how much of money or a property you possess. That means if you have money and a property, then you will form a part of that nobility, you will form that part of that upper class, and obviously your say would be taken into consideration, your interests would be protected. And therefore aristocracy is a government by nobility or upper class who has money and property as a most important determinant to enter into this form of a government. Aristocracy जो है ये ऐसी सरकार है जहाँ पर बड़े बड़े लोग, मतलब एलिट्स आप कह सकते हैं उनको, नोबिलिटी कह सकते हो, या फिर जो अपर कास्ट के लोग होते हैं ना, या फिर अपर क्लास के लोग होते हैं, ये
इस सरकार का हिस्सा बनते हैं। और अगर इनकी सरकार बननी है तो उनके पास दो चीज़ें होने बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पैसा और दूसरा प्रॉपर्टी। सो जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास भी प्रॉपर्टी है, ये लोग इस सरकार का हिस्सा बनते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर है। और पैसा और प्रॉपर्टी के दम पर इंसान कुछ भी कर सकता है। और एरिस्टोक्रेसी ऐसी एक सरकार है जहाँ पर नोबिलिटीज और अपर क्लास के लोग अपना पावर डिराइव करते हैं, और ये पावर उनको मिलता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है और प्रॉपर्टी होती है। सो इन शॉर्ट, एरिस्टोक्रेसी इज another form of a government controlled by nobility and upper class people, and they derive their power to rule from the money what they have and the property which they possess. So this is all about aristocracy. Next we have is constitutional democracy. Well, it is a form of a government in which the sovereign power of the people is spelled out in the governing constitution. So very simple, that constitutional democracy is a democracy where the government carries out its all the functioning and daily to day activities, and the sovereign power lies with the people, and everything works according to the constitution. That means whatever constitution has written down, everybody has to follow the constitution, and therefore it is called कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार है जहाँ पर सारे जो कानून बनते हैं, जो सरकार बनती है, जो पावर्स दिए गए हैं, जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं, ये सारे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही दिए गए हैं। मतलब जो कामकाज चलता है, जो फंक्शनिंग चलती है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं होता है। एंड नॉर्मली वी फाइंड सच काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी in many democratic states, including you can say India for a long time, since we got the constitution, everything is followed according to the constitution. So our constitution is very very important when it comes to Indian democracy, and therefore sometime Indian democracy also been called as constitutional democracy. So this is all about constitutional democracy. Next we have is ecclesiastical form of a government. It is a government administered by church, and here church leaders make decisions on laws based on their belief and their religion. Very simple, that in this form of a government, the state is governed by the church. Church is a finest authority and supreme authority, and the church leaders make all sort of a decision, oral laws, everything based on their belief and their religion. And the example here is Vatican City. ये जो सरकार है ecclesiastical, ये सरकार यही कहती है कि जो सरकार बनेगी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो चर्च करेगी, क्योंकि चर्च बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यूरोप में, और मिडिवल टाइम से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में चर्च की सरकार आपको सिर्फ वेटिकन सिटी में भी मिलेगी, और इसलिए वेटिकन सिटी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर चर्च लीडर अपना डिसीजन लेते हैं, अपने कानून बनाते हैं, और ये सारे जो कानून या फिर डिसीजन होते हैं ये उनके जो बिलीफ सिस्टम है, उनका जो रिलीजन है, उससे वो डिराइव करते हैं। तो ये जो सरकार है ये चर्च की सरकार है, और चर्च पूरा डिसीजन लेती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज सोशलिज्म। नाउ it is a government in which planning, producing and distributing goods is controlled by a government that seek a just and equitable distribution of a property and money. So this form of a government is again a form of a government where planning and producing and distribution is controlled by the government. And the best example of such form of a government was once upon a time is India before 1991. Our economy was socialist in nature, our government was socialist in nature, although it was a democratic,
but the planning, producing and distribution was totally done by the government of that particular time. And the idea was to distribute property and money equitably among everybody, and therefore government of India followed the socialist pattern of democracy for a long time, till 1991 in fact. And after 1991 we changed with our opening of economy, या फिर आप कहिए उसको लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया था. सो ये जो सोशलिज्म जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सरकार करती है, और ऐसे सिस्टम हमारे इंडिया में थी 1991 से पहले. उसके बाद सिस्टम को चेंज किया गया विद लिबरलाइजेशन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन या फिर ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो दिस इज ऑल अबाउट socialism, where a government in which planning and producing and distribution of goods is controlled by the government. And next we have parliamentary democracy. It is a political system in which the legislature selects the government according to party strength as expressed in the election. Now, this is very obvious, very simple system to understand, that in parliamentary democracy, we have a political system where the legislators या फिर legislatures selects the government according to their party strength. That means whenever we have an election in the parliamentary democracy, once we have the election, then certain political parties gets majorities. So once we have the election in the parliamentary democracy, then the largest political party which has got largest number of seats will form the government, and all the legislatures who have been elected to the parliamentary democracy will form their government according to their party strength. So very obvious that any political party which gets the majority forms the government in parliamentary form of a democracy. And here the best example is India, because in India we have the parliamentary form of a democracy where we have elections, and after the elections whichever party gets the majority gets an opportunity to form the government, and all those legislatures of that particular party plays a very important role in forming the government. Parliamentary democracy एक ऐसा political system है जहाँ पर जो legislatures रहते हैं वो अपनी सरकार को बनाते हैं, और ये legislature अमूमन according to party strength अपनी सरकार बनाती है. एग्जाम्पल, इलेक्शन के बाद जो भी कोई पार्टी अपना बहुमत स्थापित करती है, या फिर जो भी कोई पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो उसको सरकार बनाने का राइट मिलता है, या फिर उसको सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और बाद में ये जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर लेजिस्लेटर्स रहते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं और अपना लीडर चुनते हैं, और उस लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. सो दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी वर्क्स. और इसका जो उदाहरण है, उसका जो एग्जाम्पल है, भारत है, इंडिया है. हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया गया है, और एवरी आफ्टर जनरल इलेक्शन आप देखोगे तो जो चुने हुए लोग जो होते हैं या चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वे अपने पार्टी के एक लीडर को चुनते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और अमूमन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो रहती है उसी को ये राइट मिलता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट. कभी कभार हमने ये भी देखा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती है तो वो अलायंस भी बना सकते हैं और अपना सरकार बना सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट parliamentary form of democracy. And the last very important point of this part is monarchy. Well, it is a government in which the supreme power is lodged in the hands of the monarch,
who reign over the state or territory, and usually for his life and by family rights. And the best example of such monarch is all those uh, ancient monarchies which we had all over the world. And in fact, today we have a monarchy in some part of the countries. Example, we have monarchy in Saudi Arabia, where the king is a final authority. The supreme power of the government lies in the hands of the monarch, and he is the one who rule all over the state as well as the territory. And the monarch derives his power from the family and by his family rights. And therefore monarchy is another one of the form of a government which is very important to learn and to understand. So this is all about the form of a government in the part 2. And in this part 2 we have talked about democracy, we have talked about aristocracy, we talked about constitutional democracy, ecclesiastical democracy या फिर form of a government, socialism, parliamentary democracy and monarchy. I hope you have understood this second part and the form of a government. I will see you in the third part soon. Till then, take care.